Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start off our discussion with the next subsection, which is about medically important phyla. So first of all, let's have a look at the big picture of this subsection. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे ऑन द टाइनिया सोलियम एंड फिशियोला हेपेटिका, these two major members of the phylum platyhelminthes as given in your syllabus. And secondly, we'll talk about the Aschelminthes और phylum Aschelminthes में से हम Ascaris lumbricoides, Entrobius vermicularis और Ankylostoma duodenale को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली विल टॉक अबाउट द फाइलम एनिलिडा, जिसमें ख़ास तौर पे हम फोकस करेंगे ऑन द हिरोडीनिया मेडिसिनेलिस. एंड फोर्थली वी विल टॉक अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें ख़ास तौर पे हम बात करेंगे मॉस्कीटो, लाइस, सेट्सी फ्लाई एंड कॉमन हाउस फ्लाई पे. And last of all, we'll talk a little bit about mollusca, specifically about snail, a member of the phylum mollusca. So let's start off with the phylum platyhelminthes. इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करें, I would like to ask a question. Seen here, statement है हमारे पास, uncooked beef or pork can result into infestation by. A option is tapeworm, B option is hookworm, C option is pinworm, and D option is roundworm. And the best response to this question is tapeworm. एक और